Next one is that speed time graph when a body decreases the velocity uniformly. When a velocity of the body decreases uniformly, in that case acceleration will be decreased. That means uniform retardation. Retardation is the negative form of acceleration. When the body is uniformly decreases its speed, when a body uniformly decreases its speed, that means in that case the velocity speed is VT graph. That means velocity time graph of the body looks like that. This is the straight line. Speed time graph showing uniform retardation. In that case, the velocity of the body is decreases uniformly with respect to time. Second point is that in a speed time graph of a body, a straight line sloping downwards, that means नीचे की ओर, straight line sloping downwards, that means toward the time axis. देखो slope जो down हो रहा है, that means this line is the direction of this line towards the x-axis. In that case, a body having uniform retardation. That means straight line sloping downwards indicates uniform retardation. तो अब तक हमने जितना भी ग्राफ के बारे में डिस्कस किया है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑल द केसेस इज जीरो. जो भी केसेस में हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ किया, दैट मीन्स चाइल्ड दिस वे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, सारा का सारा केस में क्या था कि अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी जीरो. अब अगर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का जीरो नहीं हो, इन दैट केस हाउ वी कैन सॉल्व दैट. So before that we will take an example. Example number 1. Solve example number 1. Example number 1, page number what? 32. Page number 32. The question is that this is the graphical questions. Question is that 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means speed. S-P-E-E. The speed or velocity VELOCITY velocity. That means in meter per second. Speed or velocity in meter per second, and this way time in second. This is x-axis. That means कहाँ तक गया ये 6 तक. Look at the line. That means कि this is the O, 0 and 0. That means कि a body having initial velocity 0 and uniformly accelerate, the body having uniformly accelerate. That means ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. दैट मीन्स कि 0 to देखो 1 से लेकर के 6 सेकेंड में बॉडी का जो वेलोसिटी हो गया कितना हो गया, दैट मीन्स कि 4 सेकेंड में. दैट मीन्स 4 एंड फाइनली दिखा रहा है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे 10 सेकेंड. And last one is 16 second. As per the graph. अब देखो तो बेसिकली क्या है, इसको हम लोग अभी नहीं लेते. सपोज दैट लुक एट दिस पिक्चर. दैट मीन्स कि 4, 10 and 16. This is the time. तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 में भी 11, 12, 13, 14, 15, 16 में भी 1, 2, 3, 4 इस तरह से. That means this is the question. Question is that study speed time graph of the body given here. Answer the following questions. What type of motion is represented by OA? What type of motion represented by AO? Suppose that A, this point is O, A, B and C.
ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, बाद में हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये 4 पे है और ये है तुम्हारे 10 पे। तो क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय OA, मतलब O से A तक के बीच में जो ग्राफ है, दैट मीन्स nature of the motion, nature of the motion. So you can see that the graph is completely straight line. The graph is complete straight line. That means a body having uniform acceleration. A body having uniform acceleration. The answer 1 is uniform acceleration. Uniform acceleration. That means a body uniformly accelerated. The body uniformly accelerated. Uniformly accelerated. So how we can find the value of this? What is the actual value of acceleration? Acceleration, that means uniformly accelerated. And first answer is that कि a body क्या है, uniformly accelerated. That means कि velocity of the body will be changes and that means क्या हो रहा है, इक्वली चेंज कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म, दैट मीन्स कि दे कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यहाँ से यहाँ तक का मोशन का नेचर पूछेगा तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एंड एक्सेल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन व्हाट, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, दैट मीन्स दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व, दिस इज द स्लोप। तो वी कैन राइट दिस वन बटे दिस वन। तो लुक एट दिस, मैक्सिमम हाइट इज 6, मैक्सिमम हाइट इज 6, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 to 6, तो दैट मीन्स 6 फाइनली बाय टाइम टू चेंज 0 to 4, दैट मीन्स फाइनली 4, तो 4 एंड 3 2 इक्वल्स टू व्हाट, 3/2 इक्वल्स टू व्हाट 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A इक्वल्स टू व्हाट 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम A to A, A to A जो एक्सेलरेशन है बॉडी का कितना है कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेचर पूछेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मीन्स कि अ बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फ्रॉम O to A, O to A। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय A and B, A से B के बीच में व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड, कांस्टेंट मोशन, that means constant, that means what type of motion represented by A to B। तो A to B में क्या है, A to B में क्या है, look at this, ये क्या है, constant है, that means आप पढ़े थे हम लोग, ये क्या है, constant है, that means कि अब body having, that means body does not changes its velocity, constant है, that means यहाँ पे क्या हो जाएगा, constant velocity हो जाएगा। तो we can write the answer कि velocity of, that means A to B, what type of motion, A to B, that means a body straight line graph between the space time graph which is parallel to time axis, so the uniform speed, this is no acceleration, that means कि uniform speed, यहाँ पे क्या है बॉडी का uniform speed है और क्या है constant speed है, that means in that case no acceleration, no acceleration, that means no acceleration, in that case no acceleration, why, because a body having uniform or constant speed or velocity। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाय BC, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय BC, लुक एट दिस, BC, B to C, तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय BC। तो जो स्लोप ऑफ द कर्व को देखो वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द कर्व डाउनवर्ड, दैट मीन्स टुवर्ड द time axis, toward the x-axis, that means time axis। In that case a body having uniform retardation, that means ये body क्या uniformly retardation है, that means decrease कर रहा है, velocity of the body decreases equally in equal interval of time, that means uniform retardation। तो how we can find the value of this uniform retardation? तो क्वेश्चन C, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, C यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यहाँ पे क्या बता सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ द मोशन पूछेगा तो यूनिफॉर्म B to C, दैट मीन्स कि B to C यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, B to C इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, क्लियर हो गया. कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी. द कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व व्हाट, दिस वे. तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस. लुक दिस. तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि फाइंड द रिटार्डेशन, फाइंड द रिटार्डेशन. यू कैन एक्चुअली you see example, you can see that example number 1 and page number 32. Question number D कि find the acceleration हो गया and calculate the retardation of the body, calculate the retardation of the body, slope of the body, slope of the graph is the retardation or acceleration, this value. So that means कि this will go by this way, so we can write that कि A, that means acceleration or minus E, that means retardation. Retardation. So negative acceleration is called retardation. So that means retardation, R-E-T-A-R-D-A, retardation equals to what? Slope of the curve. Look at this. Equal to what? This height equal to what? 6. This is height and this one. So this bate this is called slope of the curve. दिस इज इक्वल टू वाट 6. स्पीड क्या है 10 मीटर पे स्पीड ऑफ द कार देखो कितना है 6 है. 10 सेकेंड पे स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू वाट, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द कार इक्वल टू वाट 6 मीटर. तो 6 बाई टाइम, तो टाइम दैट मीन्स 10 to 6 दैट मीन्स 16 minus 10 इक्वल टू वाट 6 कैंसिल 1, दैट मीन्स कि माइनस ए इक्वल टू वाट 1 meter per second square. That means retardation equal to what? 1 meter per second square. तो 1 meter per second square velocity of the body will decreases. क्या करे? Decrease करे. 1 meter per second square is the retardation. Retardation. Last, calculate the retardation. Find out the distance traveled by the body A to B. सेकेंड क्या करें कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ए टू बी के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया बॉडी के द्वारा उस बॉडी को उस डिस्टेंस को निकालना है. द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, दैट मीन्स कि दिस इज द शेडेड एरिया, दिस इज द शेडेड एरिया, दिस इज द शेडेड एरिया, दिस इज द शेडेड एरिया. स्पीड, सॉरी डिस्टेंस, तो DISTANC, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम. Speed of the body, that means locate this. This is the area na, this is looks like a rectangle, this is looks like a rectangle, that means distance equal to क्या? Area of rectangle, area of A and rectangle, area of rectangle equals to what? That means कि AB by AN, that means कि AB into AN. AB, तो AB equals to what? AB equal to what? Look at this. AB equal to what? That means कि 4 minus, that means 4 minus टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल लेंथ कितना है? 10 है. आपको ये वाला चाहिए, दिस डिस्टेंस. That means 10 minus 4. 10 minus 4 equal to what? 6. That means 6 into AN. This equal to what? This. That means 6 बराबर 36 meter is the answer. So you can solve after using all those logic, the graphical questions. Your homework is that your homework HW, your homework page number 44, question number 62. S Chand and page number what? 43. Page number 43, question number
60. This is your homework. I hope you will understand all those things, and we'll see two questions, page number 44, 60, question number 62 and 60. You have to solve it. Thank you for watching this video and have a nice day.